Hello everyone, my name is Aryan and I welcome you all to my YouTube channel. So this is going to be the second part of our ongoing series on open source, GSoC and web development. So in this part, Shirsh will be covering all the aspects of open source contribution, tell you how to start with the open source, basic idea of Git and GitHub, what to do in open source, how to use it and all aspects. We will also be covering a basic of GSoC, what is GSoC, how it can be useful to you and all. But to go deep into the GSoC, we will be bringing in another video that will be the third part of this series in which we covering all the aspects of GSoC. So let's start with the video and please don't forget to subscribe to my channel and like this video. हम आखिर में सबके डाउट्स ले लेंगे, प्लीज चैट में मत डालो। हाँ मतलब ठीक है सो यार मेरा लिंक राइट दो नाउ मेरे पास जस्ट मेरा लिंक्डइन चाहिए तो यहाँ पिन सेक्शन में है, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। पिन कर रखा है मैंने, वहाँ पे चेकआउट कर लेना। या यू कैन कंटिन्यू। so we can start with this the main part या that is GSoC तो and पहले so या अब इसके अंदर I think the screen is visible decoding GSoC right या हाँ so now let us begin and a lot of चीजें जो इसके अंदर लोग शेयर नहीं करते that is basically they explain the theory but I'll be here showing so ठीक है that's all. So what I was saying कि basically a lot of people doesn't explain कि exactly कैसे practically you go and that is something which मैंने बहुत struggle करा था. So I'll be going with practical changing to the links and searching वो एक बार मैं वो demo दे दूंगा which may definitely vary from organization to organization but that's just the way I went and learn about the OWASP org. So okay, I think so. Yeah. So we'll be going like what is an open source, GSoC, myths versus fact, pros and cons. What's GSoC new here, and FAQs, eligibility, beginner roadmap, and our experiences. That's the way we'll go. Okay. So first of all, open source. So a lot of people doesn't understand open source exactly क्या होता है. I think my slides are visible, right? या you can continue. So ओपन सोर्स बेसिकली जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम में से मोस्टली लोगों ने लिनक्स यूज करा ही होगा पाइथन यूज करा ही होगा अब उसके लिए हमने कभी पे नहीं करा बट समवन इज एक्चुअली वर्किंग ताकि आप उसको फ्री में यूटिलाइज कर सको सो दैट इज बेसिकली ओपन सोर्स कि उसके अंदर क्या होता है कि कम्युनिटी पूरी आती है एंड दे वर्क जस्ट कि हम उस चीज का बेसिकली बेनिफिट उठा पाए सो ओपन सोर्स के अंदर बेसिकली क्या रहता है यू बेसिकली जिनके उनके कोड्स होते हैं वो सब पब्लिकली अवेलेबल होते हैं मोस्टली ऑन गिटहब अदर लोगों की उनकी और साइट्स होती हैं उन पे अवेलेबल होते हैं you modify them you distribute you have that license and that's an open collaboration so Linux basically the github actually जो पूरा बना था वो सिर्फ इसलिए बना था ताकि Linux को वर्क कर सके and for Linux collaboration. So Linus Torvald was the guy responsible behind every of this thing, and he's the guy who actually is the biggest champion and the founder, the one who did the open source and made us everything possible as Linux जो हम use कर रहे हैं, Python हो गए, and there are React, TensorFlow और ऐसी पता नहीं कितनी सारी library, Blender, GNU का GNU and like there's many things जो हम free में use कर रहे हैं and we don't even recognize कि उनके लिए कोई कितना काम कर रहा है and they're so professional also. So this is basically open source. Now what is GSoC? So I'll tell you GSoC basically mostly what Google saw कि अब फ्री में कोई क्यों ही काम करना चाहेगा ये बात है एक्सपीरियंस के लिए एक हद तक लोग करते हैं बट फिर भी इतना नहीं करते तो गूगल केम एंड गूगल से ठीक है लेट अस मेक दिस थिंग वर्क एंड बाय incentivizing this thing तो लोगों को simply Google did कि you work for this org and we'll pay you for it ठीक है so there are like it is a 12 plus week program where you get a mentor there's an organization and everything जहाँ पर you work for this org you make like write code for them you do documentations there are a lot of things involved and that is basically GSoC like around uh, just around, I think 9,000 people submitted their application and some lakh of the people actually signed up for the GSoC and there's no data how many contributed.
So 9,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी एंड उसमें से लाइक अराउंड एप्लीकेशन में 1200 सेलेक्ट हुई थी. इस बार थोड़ा बढ़ा दिया डेटा, अराउंड 20% का कुछ सिलेक्शन रेशियो रहता है जितनी एप्लीकेशन आती है उसमें. तो ये चीज रहती है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्ग टू ऑर्ग की, क्योंकि बहुत चीज रहती है कि तुम काम करो और सब करो लेकिन सेलेक्ट ना भी हो. सो व्हाट इज GSoC? तो आ गया. व्हाट इज GSoC इज नॉट बेसिकली, इट्स नॉट एन कॉम्पिटिशन एग्जाम, नाइदर इट इज एन इंटर्नशिप, नाइदर इट इज अ रिसर्च इंटर्नशिप, ना ही ये ICPC की तरह कॉम्पिटिटिव कोडिंग का टेस्ट है. And it also not guarantees you that a placement in Google. That is a lot of people have a myth that GSoC क्रैक कर लिया तो गूगल के अंदर अब जॉब पक्की. दिस इज नॉट लाइक दैट. तो वन मोर थिंग, आई पर्सनली फील GSoC बहुत ओवर हाइप भी है. देयर आर दिस थिंग. सो नाउ दैट द पॉइंट इज कि other such programs. So MLH है, MLH like the GSoC is having 20%, MLH के अंदर 1% acceptance ratio है. एंड उसके अंदर legit criteria है कि अगर सपोज अभी मैं अपना पिच कर रहा हूँ अबाउट द प्रपोजल एंड एंड मेरा इंटरनेट लैग हो गया, आई एम स्ट्रेट अवे आउट. सो दिस स्टफ आल्सो ये है. एंड देयर आर समर ऑफ बिटकॉइन. अगर किसी का GSoC हो गया तो ही हैज दिस थिंग कि उसको सीधा लेटरल एंट्री है समर ऑफ बिटकॉइन के अंदर. ही डजंट हैव टू गो टू द होल प्रोसेस. सीजन ऑफ डॉक्स भी होता है फॉर डॉक्यूमेंटेशन. LFX प्रोग्राम है बिट्स के अंदर से. मेरे को जितना ध्यान है, अभी एक बंदा पुष्कर मिश्रा, ही इज माय बैची एंड उसका भी LFX क्लियर हुआ था. गर्ल स्क्रिप्ट ऑफ समर ऑफ कोड है जो बहुत इजियर होता है GSoC से. उसका एक अलग प्रोसेस है. हाइपर लेजर भी है एंड दिस ऑल अदर प्रोग्राम्स जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो आफ्टर GSoC और बिफोर GSoC just to start about open source contributions. Now, okay. Shirsh, can you tell me, like, before moving on, is there any benefit you students will get in jobs and or in their future corporate life if they crack GSoC? Yeah, so that's the point. Next, pros and cons of GSoC. So pros definitely that is key. If that key GSoC के अंदर basically क्या होता है, you work on a real and live project. That is not like an internship की you just write a code or maybe a research project की जहाँ पर एक code लिखोगे and if it works then it submit it. It is just direct a live project and if your code gets merged सीधा website पे change. तो वो एक्सपीरियंस मिलता है. दैट इज अ वेरी बिग एक्सपीरियंस. और ये इसमें क्या होता है, गूगल इंश्योर्स ऐसा भी नहीं कि अगर एक ऑर्ग के अंदर कोई भी नहीं है या सपोज इफ यू आर द ओनली पर्सन अप्लाइंग एंड यू आर नॉट मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स, तो दे आर नॉट लाइक दे आर नॉट की बाउंडेड कि नहीं इसको तो लेना ही पड़ेगा. दे विल सिंपली नॉट टेक. उस साल उस ऑर्ग के लिए कोई बंदा सेलेक्ट ही नहीं होगा. सो दैट स्टैंडर्ड is maintained and because of the standard a lot of company respects that कि GSoC अगर हुआ है तो हाँ इसको काम आता है. So that is one thing. You also get a lot learn new tech stack because the like my experience when I'm working with the OWASP. So definitely मैंने बहुत सारी चीज और ज्यादा clarify हुई है, मेरी APIs और अच्छी working हुई थी, तो वो सब रहता ही है. And डेफिनेटली इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा पॉइंट रहता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी रहती है. आई मेट माय मेंटर एंड डॉनी इज अ वेरी गुड मेंटर एंड स्वप्निल शिंदे एंड देयर आर मेनी लाइक आई एम हैविंग 4 mentors. सो उनके साथ एंड मे बी इन फ्यूचर like one of the stats which I was reading that 99% of the GSoC selected people wants to work again for that org and again with that mentor. So this is how things go on. So बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टेक स्टैक वाइज. एंड अनदर थिंग इज द स्टाइफंड. You get a very good stipend. So that is a biggest motivation for I'll tell you GSoC जो crack करते हैं. So this was a good motivation. So these are all the pros and actually like the cons are also there. So it's very time consuming. I'll tell you about my. Shirish, Hmm. can you tell me exactly what is the stipend you are getting? If you are Uh, comfortable with it. so, it's a public data. Like I can't even hide it. matlab. So that's the point. So I am getting like since my project is large project that is of 3 months. Okay. Timeline is around 3 months.
So I'll be getting $3,000. So, Okay. and that amount varies from country to country. This is an amount in India you get. Some in other country you'll be getting some other amount, and for some other country you'll be getting other amount. So this amount varies. And so in India, if you are opting for a large project, so there's a small, medium, and large project. I think for medium you get 1750, and for I think smaller project you get $750, something like this. And larger project you get $3,000. So this is what I'm getting. Other cons, which GSoC, it's basically very high time consuming. So I almost used to work for 8 hours straight without, sometimes maybe used to forget about food. And that's just me being actually, I have a different style of working. You might be more disciplined than me, so would be much easier for you. But मेरी और भी बहुत competitive थी since, so that thing happened. So ये चीज रहती है. So I haven't told about my org. So actually my org is OWASP. A lot of you people I think who are in cyber security, they might be knowing what OWASP is. So OWASP Foundation is basically the like the OG for cyber security. Yeah, because exactly, Kritika. OWASP top 10. Yeah, why? Because OWASP top 10, OWASP is like there's a software Zap proxy which OWASP makes, and it just gives you like straight a free software जहाँ पर तुम website डालो and you'll be simply getting bugs इसके अंदर जो है कि the possible ways to hack it. So ये software like OWASP free में देता है, which lot of company uh, that क्या कहते हैं charge of around like lakhs of rupees, but OWASP does it for free. So ये org जब मुझे दिखी थी, I had a very special attachment to this org because मैंने like देखो 4 to 5 years में cyber security में काम करता था. OWASP was a software जो मैं काफी use करता था. So that's about my org. And the cons भी हैं ये, that is more like time acads के लिए कम मिलेगा. Other than that, कॉम्पिटिटिव भी रहती है. एंड वन थिंग इज कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सब कर दो. लाइक ऑर्गेनाइजेशन आ भी रही है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड, उसके बाद यू फाइल फॉर एप्लीकेशन, इवन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, बट देयर आर स्टिल द चांसेस कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्लॉट्स ही नहीं मिले. तो वो चीज भी रहेगी कि एक सैड पार्ट भी रह जाता है कि even you'll work so hard but there are chances कि you don't get selected. So ये चीज रहती है. और बाकी intern prep और वो सब तुम थोड़ी opportunities use करते हो, but at the end of the day pros are way higher than cons. So yeah, why to participate? Yeah, good learning experience, working with a large code base. So most of the people wouldn't have seen these much of lines of code एक साथ, तो वो experience एक बार मिल जाता है. Like I'll say DVM chaps have a leverage here because उन्होंने generally वो code base और server का काम देखा होता है in first time. SUTT also. So that is a thing कि a lot of people get that benefit. Another that कि real world experience है, distributed development, coordinating with the team, building networks and all things happen. So currently I'm working with the people from uh, Bangladesh, and a lot of Indians are there, and few from Bangladesh and few from USA, and I don't even know what country they are from. So that gives you a very exposure, and we are having a daily meets with them. So that's a very good exposure. Prerequisite parts. Okay, I think it is not visible here, but I'll tell you what are the prerequisites. So prerequisites के अंदर अगर अपन देखें that things that actually matter, that's a knowledge that you should actually know a popular programming language. So it can be Python, C, C++, but a particular you need to be like a thing कि I am an app development guy, I'm a web development guy, I am a system programming guy और सच थिंग. तो एक वो पर्टिकुलर पार्ट आपको आनी चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बाकी आप साथ में सीख ही जाओगे. Some experience of version control, that is Git, GitHub and GitLab. So ये सब चीजें भी आनी चाहिए because that is the most important thing about क्या कहते हैं basically this thing. So yeah, some experience or at least then urge to gain at Linux, Mac OS. Basically Linux, you should have an experience. I'll not say Mac OS, yeah, definitely because command line same रहती है. Windows won't help you here because ये जो development के parts आ गए कि essentials, Git and shell. So you should understand the shell command and all of these things. So Linux and
विंडोज won't help you, and लिनक्स के जो कमांड्स है उनमें तुम्हारी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, good communication skills, because at the end of the day writing your proposal you need a good communication skills. So yeah, things that doesn't matter, I can say that's branch, CGPA, university, college, country, association within the field of project. That is something which totally doesn't matter. So yeah, coming to a fun fact. So India from like past 7 years has produced the most accepted, have been accepted in GSoC. This Pilani campus has been in 2021 was at the fourth highest number of selections. But the saddest part is basically this time in 2024, only 3 people got selected. That is, one was me, another is Prakhar Bhaiya, and another one is also there. So only Is there three any people specific reason for this? Like, why that so? they can, that is something we can't justify at the end of the day, because the problem is, I personally feel कि इसके अंदर वो जो कोडिंग कल्चर होना चाहिए थोड़ा खत्म हो गया है. So Okay. this could be the reason we have not been engaging into a lot of hackathons and all of these things. So yeah, that's a start part right now, because look at the data. 2021 में 18 लोग GSoC पे हुए थे सिर्फ विद पिलानी campus, and from Goa 21. But this Yeah. now has declined. So I hope कि इसके बाद the data again उस पर आता है, and we'll be contributing for the open source and representing our country, and also yeah, that bringing it back. So that's the now what is the timeline? So basically, with my example only we'll start ki how I went. So from so November से December में early contributions कहा जाता है, but I think a lot of people at that time have compre. So in which we are having our compre exam. So at December time, I was having my compre exam. So around 22nd or 21st some मेरे compre के exam खत्म हुए थे, और उसके बाद जब मैं घर आया, I took it as a kind of new year resolution कि अभी मेरे को एक तो Go सीखनी है, plus उसके साथ I have to learn like कि GSoC exactly क्या है, and I'll figure it out. So that is a time where I was selecting my org. Then once I selected the org, I went for contribution. Then I went for proposal writing, which comes around the May time. And contributions went from January till April. 4 months straight, I made a lot of contributions. उसके बाद April का time, I spent like 10 to 15 days just for writing a proposal. So I had a 40-page PDF, which is probably the largest proposal you'll see in the GSoC thing. So that took me like around these minutes. So you just start learning to make more contribution. Because the proposal ho jata hai, then there's a like a big gap you get. So 2nd April ko I submitted my proposal, and then 27th around tak there was a gap. So at that till that time we like उसमें भी जनरली मैंने भी वही चीज करी थी कि मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम कर दिए थे, बिकॉज उस टाइम पे भी हमारे ये क्या आई थिंक मार्च अप्रैल, सो आई थिंक वी आर हैविंग सम एग्जाम्स दैट टाइम पे, तो और फेस्ट का काम बहुत सारा काम था, तो मैंने लाइट ले लिया था. बट दैट इज अ मिस्टेक. सो उस टाइम पे भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कंटिन्यू रखते हैं, सो यू नीड टू मेक मोर एंड मोर कॉन्ट्रीब्यूशन, and after if you get selected you start working on the project. So it is basically the timeline with how it's. Now let's come to Uh, this part, selecting an yeah. organization. Which, Huh. I was saying like I can just share my screen to show like website of the GSoC where timeline is mentioned properly. So just wait, Acha, I just that timeline, na? I'll share yeah. it. I'm having that in Notion. So at the time of proposal, we'll share it. So actually, now a lot of Let people me open it. keep I have opened it already. Okay, just let me share it. कहाँ पर है? Yeah. Is my screen visible to you? हाँ, so this is the timeline, but ये timeline जो है ना, ये अभी
और application के deadline, हाँ ये इससे पहले भी और चीजें, I'll just show that from my Notion page actually, because इसमें वो चीजें इन्होंने बहुत सारी हटा दी है, तो वो अभी आएगी, ठीक है. So I think my web view is visible, right? So I'm sharing up. Lot of people have a question कि org select कैसे करते हैं. So basically, just you went to this organization, there's past program, the site, and then here you'll see this 2023 program. So generally what I do is keep, first of all, there's kind of do's and don'ts, which we can see. So there's like official organization के पेज से ही ये काम करना है. That is something which everyone should understand. Your screen At is not least, visible. my screen is, oh. I hope it's visible. Yeah, now it's visible. So, like, there's only one resource, that is GSoC organization page, which is right here. So just put Google Summer of Code and you'll get this page. Now, that, how do you filter it? So let's actually do it live. That would be much easier for us to understand. So you just go to this page, Summer of Code with google.com and archives, and you'll find like past all of these programs from 2016 to 2023. Here, just simply go to the 23 program organization, and yeah, so these were all the organization जो pitch 2023 के अंदर GSoC के अंदर आई थी. जैसे हमारा खत्म हो जाएगा, 24 का भी ऐसे ही visible होगा, ठीक है. तो अब these are all the categories which are according to them there, but like still वो इतना restricted नहीं रहते हैं, मतलब like if you'll go in operating systems, you'll probably, that is moreover listed not technology wise but moreover wise कि वो company क्या काम करती है, ठीक है. So if you think that there's like end user application, so backend or this thing, so a lot of company from security, it is like कि अब जैसे I went to the security page, so OWASP is here. No, it is not कि security का तुमको कुछ GSoC में काम मिलेगा. It is more over कि ये company security का काम करती है. So based upon these things also you can filter. So as usual, I had this biasness about security. So मेरे को वही चीज पहले मैंने security ही click करा कि ओ क्या होगा. And I was looking for organization and this, like मुझे जो दो organization पसंद आई थी, one was HoneyNet and another was WAS Foundation, ठीक है. So we'll take your questions, Kritika. Just put it there and we'll definitely take this question afterwards. So I just simply, you just go to this page and अब यहाँ क्या होता है कि, so this is how technologies are mentioned कि this utilize Python, JavaScript, Django, Go and Docker. So the one who was mentioning about Go, yeah, so ऐसे मिल जाती है. And also one way is कि wait, I'll show you. Just search bar, maybe you will simply can go here and suppose put Go. So it is showing 8 companies which work in Go, but with a filter of, I think, security. So we'll go with all and you'll see 84 companies. So अब ये जो 84 company है, ये इसके अंदर basically काम करती है. तो now you can work with them कि okay, अब मैं इनका खोलता हूँ कि इसमें क्या किया जा सकता है everything. So अब basically what happens कि this is like once you visit this page, it has just a general info about it, and then you can have few links जहाँ से research की जाती है. So these were all the people who previously got selected and what were their projects, and just give it a time. Like org selection के अंदर I'll say 10 से 15 दिन लगाना चाहिए, 10 actually दिन, because बहुत important होता है तुम्हारी org कैसी है, क्या है, and you should know the history. So I'll just share one page with you. Right now, let me check because एक site है. मेरे को उसका link याद नहीं आ रहा है. Just let me check. Give me a time and
I think my screen. Sheesh, Hmm. yes, I want to ask a question. Like many students generally ask Hmm. about the organization, that if they are selecting a organization for the GSoC, so they have to Hmm. read their code bases, and these organizations are so big that their code bases are of like 1,000 lines and difficult to read them. So how one as a beginner Hmm. can read these code bases? So rather than just directly jumping to the code bases, now I'll recommend first to start with the technology. Ki, am I aligning with the tech stack or not? As you have think कि हाँ the tech stack ये ही है, like suppose I am good at okay, like okay चलो मेरे को at least ये आता है, then you will go with the code base, because even sometime happen कि code base और tech भी तुम्हें आता हो, setup ही नहीं होता है. That is something which happened with me in my first org. Like I spent, I was I'm just so stubborn कि मैं almost एक bug के लिए एक महीना लगाया हूँ कि ये मैं अब solve करके ही दिखाऊंगा. So that is a stubbornness, I'll probably say, like मतलब uh Is not it good or a bad? very good. Huh? Is it good or bad thing to like keep working on That single is bug for a I'll month? देखो, फॉर अ सिंगल बग तो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, बट आई प्रोबेबली से दिस इज वन ऑफ प्रीरिक्विजिट फॉर starting coding, because a lot of people say like there's no prerequisite to start coding, but I'll say that is a prerequisite कि you need to be stubborn. There's a coder ego कि अगर ये साला सॉल्व नहीं हुआ ना, अब मैं करके दिखाऊंगा. वो चीज Okay. बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज इन प्रोबेबली इन माय बैक एंड जर्नी ये मुझे बहुत चीज हेल्प करी थी. देयर यूज्ड टू बी बग्स लाइक 2-3 days ऑलमोस्ट, मैं 10-10 घंटा लेजिट लगा रहता था कि ये कोड सॉल्व कैसे नहीं. बहुत सिली मिस्टेक करता था, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होती थी, थोड़ा रुकना पड़ता है, देन यू स्टार्ट अगेन, देन यू थिंक रीथिंक, वो प्रोसेस रहता है, बट दैट स्टबर्ननेस ही आपको बहुत चीजें सिखा देती है. सो या तो आई प्रोबेबली से कि बहुत मेरे मतलब इतना भी स्टबर्न हो, मैं बहुत ज्यादा स्टबर्न हूँ, बट स्टिल एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो मैं मतलब अब तो करके दिखाऊंगा, उतनी तो एटलीस्ट होनी चाहिए. सो या मतलब दैट वर्क. सो एक ये जो मैंने साइट शेयर करी है चैट में, दिस इज अ वेरी गुड साइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई से, बिकॉज इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहा है कि लाइक सम a very good guy did कि सारी और का सब डेटा रख दिया. So let us take a like now अब इसके सर्चिंग में बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं. कि सपोज मुझे जैसे अब इसमें और मैंने पकड़ी हनी नेट प्रोजेक्ट, ठीक है, आई नीड टू नो कि हनी नेट प्रोजेक्ट जो है वो सही है या नहीं है, बिकॉज व्हाट थिंग्स एक्चुअली देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच मैटर व्हाइल सेलेक्टिंग एन ऑर्ग. दैट इज फर्स्ट, ये और बहुत टाइम से आनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 सीजन में कोई आई है और तुम उन्हीं में काम करने लग जाओ, बिकॉज व्हाट विल हैपन कि हो सकता है कि वो अगले तुम उनके लिए अभी काम भी करो लेकिन वो आई नहीं. Because what happens in GSoC is that first you work for that organization, and after that, I think around February or something, organizations get announced. Or February, in mid of February, I think organizations get announced. So, but you need to start your work from like way like December also to get selected. So the thing is कि अभी जिस org पे तुम काम कर रहे हो, दैट उस अगर वो और आई नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है. सो वील प्रोबेबली से कि सेलेक्टिंग एन ऑर्ग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो उसके लिए दैट मैटर्स कि बेसिकली वो और कितनी बार आई है, दैट शुड मैटर टू यू, है ना. सो अब उसका जो डेटा है, दिस साइट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन दैट, बिकॉज इसमें क्या रहता है कि अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखो, ये ऑर्ग जो है ये 24 में भी आई है, 23 में भी आई है, 22 में भी आई है, वन लाइक फ्रॉम 16 दिस ऑर्ग ये कंटिन्यूअसली जीसॉक के अंदर पार्टिसिपेट करी. सो देयर आर लाइक अ वेरी हाई चांसेस कि और 25 वाला प्रोग्राम होगा तब भी आएगी. ठीक है. तो फर्स्ट इवेंट कि मैंने अपना पहले तो टेक स्टैक देख लिया कि ओके मेरा टेक वाइज मैच कर रहा है नहीं कर रहा है. सो आई वेंट लाइक माय इंटरेस्ट, आई हैव एन इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, सो आई वेंट दिस गाय.
went की technologies कौन सी है. So it is having Golang, it is having JavaScript, it uses HTML, Python 3, Honeypot, Django, Docker. So I'm like, हाँ ठीक है, I can work for this org. अब मैंने इस org का थोड़ा history देखा कि अच्छा ये org कितनी बार आई है. And the second thing which matter is basically acceptance rate. अब कई सारी org होती है, जैसे Linux ही ले लो, ठीक है. I'll say उन org से थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, because वो जो orgs होती है ना, उनके अंदर ये सीन रहता है कि वो बहुत टफ होती है, ऑलमोस्ट वो बहुत पॉपुलर होती है, तो बहुत लोग उनके लिए compete करते हैं. इवन वास्प इज वन ऑफ दोज orgs जिनके लिए बहुत ज्यादा लोग compete करते हैं. बट लिनक्स और इन सब का तो वास्प तो एक्चुअली बहुत लोग ले लेती है. लिनक्स और इनका सीन ये रहता है कि इसमें लोग भी बहुत कम लेते हैं. तो ऐसी औरत से थोड़ा बच के रहना होता है कि लिनक्स हो गया, जैंगो हो गया, कि उनके अंदर तुम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो, बट हैपेंस कि तुमने बहुत काम भी करा और एट द एंड ऑफ द डे तुम सेलेक्ट भी ना हो. तो इसलिए या तो अगर उन और के लिए वर्क कर रहे हो तो साइड में एक और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते रहो, ठीक है. बट सोलली उस ऑर्ग के लिए वर्क मत करो, क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटिटिव और बहुत एक्चुअली टाइम टेकिंग होती है. तो अब जैसे ये हनी नेट थी, सो इट इज एन ऑर्ग जो एक्चुअली हमेशा अराउंड 10 पीपल तो ले ही लेती है. सो दिस इज वन थिंग व्हिच आई सॉ कि ओ दैट 2023 में भी इसने 6 लोग ले ही लेते हैं. 2018 आई थिंक इट टुक 16 and 17 पीपल अराउंड. सो दिस इज अ वेरी फेवरेबल ऑर्ग कि हाँ इसके अंदर सेलेक्ट होना मतलब बेटर है. सो this is what things which like I need to be for selecting an org, and then you visit this page कि अब उसके तुम honeynet org पे जाते हो. This is like that is this, and this is a GSoC 2024 announcement page. और तुमको इसके में मिल जाएंगे. अब जैसे बहुत हर साइट का अलग होता है, तो जैसे तुम्हें यहाँ पर तो इसमें मिल जाएगा. दिस इज लाइक GSoC का. अब यहाँ पर देखो एग्जैक्टली यहाँ पर इस org पे आई थिंक इट्स विजिबल ना व्हाटएवर आई एम डूइंग हियर. Yeah, That's yeah. fine. You can So do अब तुम यहाँ पर गए GSoC 2023 आइडिया. So यहाँ पर तुम इस पेज को और करोगे, या यहाँ पर देखिए you've got a Slack page. So Slack is a very important tool for communication in GSoC. और भी बहुत सारे यूज होते हैं, फोरम्स होते हैं, मेलिंग लिस्ट होती है, तो उन चीजों को भी रखा जाता है. बट जनरली जो मैंने देखा स्लैक ही यूज होता है. तो एक स्लैक चैनल मिल जाता है, तो यू जस्ट गो एंड ज्वाइन द स्लैक चैनल, और उसके बीच में तुम कम्युनिटी से बात करते रहते हो. सो कम इट्स जस्ट लाइक अगर किसी को स्लैक का आइडिया नहीं है, जस्ट टेल हिम कि इट्स बेसिकली जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप. अब फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जहां पर तुम बेसिकली just take WhatsApp, just take Discord, fuse them together. It's Slack. So kind of वैसा ही work करता है Slack. So उसके अंदर actually I'll show you my Slack. That's थोड़ा और clarify हो जाएगा, क्योंकि ये सब भी कई बार बैरियर रहते हैं, लोगों को दिखता है नाम क्योंकि Slack क्या करेगा. So I'll show you my Slack and I'll show you how we actually converse for our org. So this is like OAS BLT का channel, and this is like all the people who are working right now for the OASP and which we got selected. ऐसे ही OASP का, so मेरे को बहुत टाइम बाद ये लिंक मिला था, but this is what I found. So अब what we do is कि अभी ये बहुत अलग कॉन्वर्सेशन. so ये देखो इसमें what we used to do, अगर कोई क्वेश्चन आया कि भाई यार ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो we simply put into it and कि ask our mentors कि सर what we can do is, और अगर कोई हमारा PR एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, we simply put into it कि please accept this PR, and we just have a talk and chit chat okay about this feature, what we can do. So this Donnie BLT is our mentor. So basically this is how it works कि that with मतलब ये यहाँ पर ही हम मीट करते. This is the hurdle which we do it. So this is how Slack actually works. So one thing which is very important is basically communication maintain रखना, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छे contributions है, बहुत अच्छा है, but at the end of the day don't maintain their communication with the mentor. वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, बिकॉज OAS या मतलब एक्चुअली GSoC ये कंसिडर करता है कि ये जो काम है ये टीम प्रोजेक्ट है. सो इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद इन द कम्युनिटी, दैट इज अ बिग पॉइंट to not get selected. So you need to like be active in the community always. You talking कि मैं ये कर रहा हूँ, I can do this idea, or we can switch to this technology. And also depends on your mentor you are having, because not all of the mentors like तुम बहुत ज्यादा chit chatting हो, but या उनको ही परेशान कर रहे हो, but community में engage रहोगे तो सब अच्छा ही मानते हो उससे. तो
लाइक स्लैक चैनल तो डेफिनेटली ज्वाइन करना, या अगर कोई और उनका कम्युनिकेशन चैनल है, लिस्ट है, तो जस्ट ज्वाइन देम. एंड उसके बाद हाँ, नाउ देयर इज दिस थिंग कि अब one of the thing is कि अब जैसे I just came to this org. Now this is a project. So every organization has 10 to like 3, 4 or 10 some projects सबके पास होते हैं और उन projects पे basically काम होता है. तो this was a project under HoneyNet. HoneyNet is an organization और उसके अंदर project होता है. So my organization is OWASP and my project is BLT, bug logging 2. ठीक है, under OWASP. So similarly, HoneyNet is having a project MITM, that is man in the middle proxy, which is one of the hacking terms, if you want to go into it more deeper. Now here you get this potential task, GitHub. That is important कि तुम इनके GitHub तक पहुंच जाओ and you'll get their GitHub repo, that is man in the middle. अब GitHub का setup कैसा होता है, GitHub पे कैसे काम करता है, वो मैं थोड़ी देर में यहाँ तो बताता हूँ और सिलेक्शन के बाद, because this is a thing which that time पे मैंने सीखा था कि ओ एग्जैक्टली गिटहब को कैसे यूज किया जाता है. ये चीज मुझे पहले से नहीं पता थी कि बेसिकली गिटहब मैं यूज तो करता था, कोड स्टोर करता था, बट ओपन सोर्स के लिए कैसे यूज करता है वो थोड़ा अलग चीज होती है. दैट्स व्हाई गिटहब इज दिस. सो राइट नाउ ये चीज रहती है. अच्छा, जैसे और इसमें वैसे प्रोजेक्ट्स थे. सो नाउ इज लुकिंग, अब इनमें क्या होता है, टेक स्टैक अलग अलग डिफर करता है, हर प्रोजेक्ट का अलग अलग होता ही है. सो सम प्रोजेक्ट्स आर जस्ट 175 आवर्स एंड सो अब बेसिकली सीन क्या हुआ कि आई वेंट like selected this project, that is Intel out, because it was aligning with all of my things, the OSINT knowledge, cyber threat, Docker, Python, Django, JavaScript, React, this and oops. So it was completely aligning with my tech stack and everything, and I found this is a very like amazing project. So I went to this GitHub, but अब सीन ये हुआ था कि इंटेल आउल जो है ना, इसका अब जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑर्ग सिलेक्शन में कि हमने सपोज ऑर्ग सेलेक्ट भी कर ली, सब चीजें मैच हो गई, हमें सब मिल गया, हम कम्युनिटी भी सही लगा, एवरीथिंग वर्क्स, बट प्रॉब्लम जो नेक्स्ट पे आती दैट इज सेटअप. इस कोड को सेटअप करने में मुझे कहीं टाइम लग गया था, बिकॉज देर लाइक जरूरी नहीं है हर मशीन में चले ही चले. So every machine is different. So इस कोड को सेटअप करना. So I think that is something जो सबको basically आते ही होगा. You just simply go here, you take this link and you put git clone and simply clone this repository, and then accordingly you run it and this. So in Docker, there's simply you type your commands, sudo docker compose, make migrations, run. ये सब रहता है, ये तो उन सबको आप रन कर करके, तो दैट इज लाइक सिंस इट वाज डॉकर सो इट हैज अ स्पेसिफिक लिस्ट. अब इसका डॉक्यूमेंटेशन था, यू गो थ्रू इस डॉक्यूमेंटेशन, इन्हीं में इनका ये रीडमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फॉर डूइंग सेटअप लाइक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट लाइक थिंग. सो जस्ट ये डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीडमी पेज पे मिल जाता है. अब ये इंटेल आउल का जैसे डॉक्यूमेंटेशन था, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कोड को सेटअप कैसे करना है, कोड को राइट करना है, कि इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. अगर तुम ऐसे ही कैसे भी कंट्रीब्यूट कर दोगे, दैट प्रोबेबली वोंट गेट एक्सेप्टेड इवन इफ यू आर राइट. सो इंस्टॉलेशन, अब जैसे इसमें इंस्टॉलेशन पेज था, इस इंस्टॉलेशन पेज के हिसाब से एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स को डाउनलोड करना और वो करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरा सेटअप भी हो गया, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द इंटेल आउट, बट इसके अंदर एक पर्टिकुलर इशू आया जो बेसिकली सीन ये था कि यहाँ पर एक, नाउ जस्ट गेटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू वर्क फॉर द ओपन सोर्स. सो यहाँ इश्यूज लिस्टेड होते हैं. अब यहाँ क्या होता है कि इश्यूज के अंदर बेसिकली ये होता है कि नाउ लेट इज सपोज we take this issue, support http/2 conversion to http 3. Now this is a problem and there is a problem description and this all are things are in. So what you simply do is कि okay, आप देखते हो कोड सेटअप करते हो and then you took an issue. Generally I'll recommend कि जो issue होना चाहिए ना, अब इन पे tags लगे होते हैं, there is a kind, feature and this. So there is a label called as good first issue. जनरली वो सब और में यही फॉलो होता है, और जो थोड़े ऐसे फर्स्ट इशू होते हैं ना सिंपल, उन टैग से ही शुरुआत करो. सो व्हाट आई डिड कि आई वेंट टू दिस थिंग कि ओके गुड फर्स्ट इशू काइंड ऑफ मैंने इसमें ढूंढा, एंड अभी तो इसमें नहीं मिल रहा, बट जनरली मिल ही जाते सिंपल इश्यूज, और या तुम स्लैक कम्युनिटी में जाके पूछ लो कि कौन सा सिंपल इशू होगा. सो आई स्टार्टेड फाउंड वन इशू एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. नाउ व्हाट यू डू इज कि सपोज
this is a bug which I am probably there getting Android simulator. हाँ ठीक है. So you simply go and there are different ways of getting you assigned. So in my org, you simply type this and you'll get automatically assigned /assign. But some orgs have different. So you basically आपको बस पता करना होता है कि इस रेपो का मेंटेनर कौन है, कि इस लाइक इसको कौन मेंटेन करता है, which you can actually find it here. Yeah. So ये रहे contributors और इसके अंदर you'll just simply figure out जिसके सबसे ज्यादा contribution होते हैं और या लिखा होता है बहुत जगह, तो मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन और मैं रीड करता हूँ तो मिल जाती चीज कि इन सबका बेसिकली कौन है मेंटेनर. एंड देन यू सिंपली आस्क हिम कि आप उसको मेरे को ये पर्टिकुलर इशू असाइन कर दो. दैट इज अ जनरल एटिकेट जो आपको बेसिकली, जैसे अब इसके अंदर जो इसका डॉक्यूमेंटेशन था उसके अंदर ये देखो कंट्रीब्यूट में ये चीज लिखी होगी, रूल्स, contributor from anywhere of any kind of education to skill level and this. So everything is written. Code style क्या होनी चाहिए, how to start, back end में कैसे होगा, everything is written here. But एक बार इनके थ्रू जाना बहुत जरूरी होता है. So yeah, this is the point कि अब ये जो कवर अप करना और उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर और का मेथड है, जैसे मेरी और का तो सिंपली /assign था, इस और का कुछ अलग होगा. तो ऐसे असाइन करा के when it is assigned to you, now you have to start working on it. अब वो प्रॉब्लम कोड पे तुम काम करना स्टार्ट करते हो, तुम कोड बेस को समझते हो, तुम पूरा प्रोग्राम समझते हो विद द डॉक्यूमेंटेशन और एनी अदर मैनुअल अवेलेबल और बाय आस्किंग इन द स्लैक. सो व्हाट हैपेंड टू मी कि इसका एक बग था जो मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रक कर गया था एंड आई वाज सो इगोइस्टिक कि ऑलमोस्ट 1 मंथ तक मैं सिर्फ इस बग पे था कि अब इसे सॉल्व करूंगा. लाइक if someone from backend, I'll tell you कैसा उसमें था कि basically दो अलग अलग machines में दो अलग अलग systems को local उसको host करके दोनों को connect करना था and then you were able to just set up that thing for an issue. Almost मुझे उसके लिए एक Azure का system बनाना पड़ा, उसके अंदर वो करना पड़ा, एक बार इधर local host और एक बार मुझे उसको Azure पे host करना पड़ा and then I have to connect them together to communicate with each other and उससे एक basically वो सर्विस Azure वाली सर्विस को रन करता था एंड देन फाइनली दैट इशू वर्क्स. बट उसके सेटअप को ही फिगर आउट करना बहुत हार्ड हो रहा था. उस पॉइंट पे रियलाइज की मुझे ये और छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है. अगर मैं इसमें फाइनली 1 महीने बाद अराउंड कुछ एक कंट्रीब्यूशन भी कर पाऊंगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा. तो आई लेफ्ट दिस ऑर्ग हियर एंड आई वेंट फॉर सर्चिंग अनदर बेटर ऑर्ग कि अब मेरे और टेक स्टैक या उसके लिए कौन सा बेटर रहेगा. तो देखो इट इज नॉट जस्ट कि ये और में टफ है, ऐसा कुछ नहीं है. वो जनरली बस मेरे साथ अलाइन नहीं हो रही थी. कई बार वो चीज हो जाती है कि जिंक्स हो जाता है कि नहीं हो रहा है तो फिर वो नहीं होता है. तो डिफरेंट देन आई